गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर एस्पिरेंट। सभी अभ्यर्थीगण को मेरी ओर से शुभ संध्या। साक्षी गुड इवनिंग, विकास प्रजापति वेरी गुड इवनिंग, एंड परशुराम कुमार जी वेरी गुड इवनिंग। सो लेट अस बिगिन आवर इवनिंग सेशन। संध्याकालीन सत्र की शुरुआत हम अब करेंगे कुछ ही क्षणों में डियर एस्पिरेंट्स। और इसी बीच दिल्ली में कौन होगा मुख्यमंत्री, इसका कसमकस जारी है। और आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज भी हो चुका है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच पहला मैच हो रहा है ग्रुप ए का, और भारत का मैच कल है 1:30 बजे दिन से, भारत और बांग्लादेश। सो परशुराम कुमार जी गुड इवनिंग, साक्षी गुड इवनिंग, एंड विकास प्रजापति एक बार फिर आप सभी को शुभ संध्या, बहुत बहुत गुड इवनिंग। सो हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द डे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ABCD टाइप ऑफ क्वेश्चन। साइरस clouds are composed of ice crystals. Dear aspirants, geography. Today is Wednesday, and on Wednesday we take up geography. So, cirrus clouds are composed of ice crystals. B. Cirrus clouds exhibit a flat base and have the appearance of rising domes. C. Cumulus clouds are white and thin and form delicate patches and give a fibrous and feathery appearance. D. Cumulus clouds are classified as high clouds. Now you have to select the correct answer out of these four options: A, B, C, D. Four statements, one statement is correct. So, dear aspirants, आपको ये पता लगाना है कि वो कौन सा स्टेटमेंट है। पहला हमने बताया साइरस क्लाउड्स आर कंपोज्ड ऑफ आइस क्रिस्टल्स। बी, साइरस क्लाउड्स exhibit a flat base and have the appearance of rising domes. C, cumulus clouds. A is the correct answer. A is the correct answer, Sakshi, and uh, your preparation is really up to the mark. A is correct answer. Why have you deleted? Okay, A is the correct answer. Correct answer. Okay. Yes, yes, Sakshi, your answer is correct. Cirrus clouds look fibrous and appear like wisps, dear aspirants, on the blue sky and composed of ice crystals. Cumulus clouds are with the round top and horizontal base, and these are classified as clouds with no definite height. So our answer should be A. A is correct. Now, question number 2 of the day. The axis of, consider the following statement. The axis of the Earth's magnetic field is inclined at 23.5 degree to the geographic axis of the Earth. Is it true? Okay. Second statement, the Earth's magnetic pole in the northern hemisphere is located on a peninsula in northern Canada. And the third statement, Earth's magnetic equator passes through Thumba in South India. Which of the statements given above is are correct? A 1, 2, 3, B 2, 3, C 2 only, and D 3 only. Now you have to find out the correct answer. This question is also very, very important because you might have gone through this reporting that the magnetic field of the Earth is moving towards north. So, first statement, the axis of the Earth, Mr. Alam, good evening. The axis of the Earth's magnetic field is inclined at 23.5 degree to the geographic axis of the Earth.
whether this statement is correct or not. Now, the second statement, the Earth's magnetic pole in the northern hemisphere is located on a peninsula in northern Canada. Okay. And the third, Earth's magnetic equator passes through Thumba in South India. This third statement, I know this is correct. Okay. Third statement is correct. Now you have to find out the correctness of first and second. So, dear aspirants, the answer to this question is B, 2 and C. First statement is not correct. The axis of Earth's magnetic field is inclined at 23.5. This statement is not correct. Okay. So, second and third statements are correct. An imaginary line joining the magnetic poles would be inclined by approximately 11.3 degrees from the planet's axis is okay rotation. The axis of Earth is inclined to the plane of the ecliptic at an angle of 66.5 degree, giving rise to different seasons and varying lengths of day and night. Earth rotates on its own axis, tilted at an angle of 23 and 4 degrees every 23 hour 56 minutes, giving rise to day and night. So this is the correct explanation. So our answer is B. Second and third statements are correct. The first statement is not correct. Let us concentrate on this very question number 3 of the day. Consider the following statements. We have only 2 statements in this MCQ. Number 1, either of the two belts over the ocean at about 30 to 35 degrees north and south latitude is known as horse latitude. घोड़े का अक्षांश, आपने मैट्रिक में इसे जरूर पढ़ा होगा, क्लास 10th में घोड़े का अक्षांश, या क्लास 9th के ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा डियर एस्पिरेंट्स. तो देखें, आइदर ऑफ द टू belts over the ocean at about 30 to 35 degree north and south latitudes is known as horse latitude. So 30 डिग्री से 35 डिग्री का जो अक्षांश है वो दोनों हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ये दोनों में घोड़े का अक्षांश कहा जाता है. सेकेंड, हॉर्स लैटिट्यूड्स आर लो प्रेशर बेल्ट्स. निम्न दाब वाले ये क्षेत्र हैं. नाउ यू हैव टू एग्जामिन दिस बोथ द स्टेटमेंट्स. व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? A only 1, B only 2, C both 1 and 2, and D neither 1 nor 2. So dear aspirants, इसका आंसर क्या होगा ये आपने बताना है. Okay. Are you knowing the answer to this question? Second statement is not correct, dear aspirants. So our answer to this question is A. Horse latitudes are subtropical high pressure belts which extend between 30 to 35 degree latitudes in both the hemispheres. मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में यह है, किंतु 30 to 35 डिग्री पर है और ये हाई प्रेशर बेल्ट. द सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज द सेकेंड स्टेटमेंट ओके सेज हॉर्स लैटिट्यूड्स आर लो प्रेशर बेल्ट्स. सो वी हैव टू discard the second statement and our answer is B. A, that is only first statement is correct. Our answer is A, only first statement is correct. Let us move to the next question, dear aspirants. और मेरा पूरा विश्वास है कि आज के क्लास में आप ज्योग्राफी के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन्हें नोट कर रहे हैं और हृदयंगम कर रहे हैं.
आपका अभ्यास भी इसी तरह हो रहा है. So consider the following statements. Number one, the annual range of temperature is greater in the Pacific Ocean than that of Atlantic Ocean. Second statement, the annual range of temperature is greater in the northern hemisphere than that in southern hemisphere. So we have only two statements, dear aspirants. Now we have to find out which of the statements given above is are correct. A only one, B only two, C both one and two, and D neither one nor two. So what should be the answer, dear aspirants? The annual range of temperature is greater in Pacific Ocean. This statement is not correct than that of the Atlantic Ocean. The annual range of temperature is greater in the northern hemisphere. Okay, in the northern hemisphere, this is correct. The annual range of temperature is greater in the northern hemisphere than in the southern hemisphere. This is correct. Okay, so our answer should be B only 2. Bigger the size of ocean, lesser the annual range of temperature. Now please note it down. Okay, जितना बड़ा आकार है, जितना बड़ा आकार है, ओके, किसका, महासागर का, तो उतना ही वहां एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा. ओके, I think you have noted it. If not, please write it in your notebook, dear aspirants. I am going to repeat. Bigger the size of ocean, ब्रैकेट में आप पैसिफिक भी लिख सकते हैं, it's the biggest. Lesser the annual range of temperature. So you should apply this trick. The annual range of temperature is greater in the northern hemisphere than in the southern hemisphere. And you should discard, eliminate. Number one, the annual range of temperature is greater in Pacific Ocean than that in Atlantic Ocean. So first statement is not correct. Our answer should be B only 2. Now let us have next question. This is question number 5 of the day. The clouds float in the atmosphere because of their low, L-O-W, W, A, velocity, B, temperature, C, density, and D, pressure. ये $1,000,000 क्वेश्चन है आज का, डियर एस्पिरेंट्स, और आपने इसको बताना ही चाहिए. क्लाउड फ्लोट करते हैं आसमान में, क्यों? ओके, किस बात के कारण, ये तो आपको जानना ही है. और क्या कम होता है? द क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमोस्फियर बिकॉज ऑफ देयर लो. परशुराम इज आंसरिंग टेम्परेचर, नो, डेंसिटी. ये बहुत सिंपल सवाल था. डेंसिटी, डेंसिटी के कारण क्लाउड्स फ्लोट करते हैं वायुमंडल में. एज द क्लाउड्स आर लेस डेंसर देन द बिलो एयर, दे कैन फ्लोट इन द एटमोस्फियर. लो डेंसिटी. यस साक्षी, करेक्ट आंसर, डेंसिटी. और ये सब लिख लें कागज में, नोटबुक में. कुछ दिनों के बाद फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे. ऐसा भी हो सकता है यही सारा प्रश्न आएगा, नहीं आएगा कंसेप्ट बनेगा, मेंस में लिखने में सुविधा होगी. डियर एस्पिरेंट्स, अगला सवाल. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द स्टेटमेंट व्हिच इज आर करेक्ट. We have two statements. Air pressure at sea level is lower than at the mountain top. क्या ये बात है? एक बार फिर से सुने. एयर प्रेशर, वायु दाब, एट सी लेवल, ओके, समुद्री स्तर पर, लोअर, न्यूनतर, देन दैट ऑफ द माउंटेन टॉप. Second, air pressure decreases when air descends. Which of the
Statement given above these are correct. A only 1, B only 2, C both 1 and 2, and D neither 1 nor 2. Raghava is telling B is the answer, but according to me, both the statements are incorrect. Dear aspirants, both the statements are incorrect. So, you should correct your answer. ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है. Both the statements are not correct. Why do I say? Because, dear aspirants, air pressure increases when air descends. Air pressure increases. The second statement is air pressure decreases. But this is not true. हवा जब फैलेगी तो प्रेशर इंक्रीज करेगा. ओके. एयर प्रेशर एट सी लेवल इज हायर. समुद्र पर में ज्यादा रहेगा देन दैट ऑफ द माउंटेन टॉप. सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. समझ में बात आई? नहीं आई? बहुत बेसिक्स है ज्योग्राफी का. एक बार फिर से हम आपको सुनाएंगे सो दैट यू शुड बी एबल टू राइट इट इन योर नोटबुक एंड यू शुड कंसेप्चुअलाइज इट. आपको कंसेप्ट भी बनाना है. कंसेप्ट भी बनाना है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट. नंबर 1, एयर प्रेशर एट सी लेवल इज लोअर than at mountain top. This is incorrect. Air pressure at sea level is higher with comparison to the air pressure at mountain top. And the second statement, air pressure decreases. No, it increases when air descends. So now, I hope it is clear. Now let us see this question number 7 of the day. Which of the following affects atmospheric pressure? वायुमंडलीय दाब को क्या प्रभावित करता है? इन हिंदी. Which of the following निम्नांकित में से कौन affects प्रभावित करता है atmospheric pressure? A. Temperature, B. Earth rotation, C. Altitude, and D. all of the above. Now please attempt this question. Sakshi, Parsuram ji, Mohammad Alam, Vikas Prajapati, Raghava. D is the correct answer, Mr. Raghava. D is the correct answer. And Mr. Alam as well. So, atmospheric pressure is being affected by temperature, earth rotation, altitude, all of these. All of the above given factors have effect on atmospheric pressure. The pressure exerted by air on the surface of the earth is called as atmospheric pressure. ये भी तो जानना है कि वायुमंडलीय दाब है क्या. So dear aspirants, the pressure exerted by air on the surface of the earth, जो वायु पृथ्वी के धरातल पर दबाव बनाती है, उसी को तो हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं. साक्षी, डी करेक्ट आंसर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन. और ये तो क्षेत्र दर क्षेत्र वेरी करेगा. ओके, विविधताओं भरा होगा. आइए चले एक और प्रश्न ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. Consider the following statement and choose the statement which is correct. Number 1, the process by which two air masses of different physical characteristics are brought together is frontolysis. I hope you are aware with this terminology. Frontolysis. Frontolysis. Second statement, the gradual dissipation of the frontal zone is called frontotemporal.
जेनेसिस। सो ग्लॉसरी जब आप ज्योग्राफी के बुक में अंत में पढ़ेंगे तो ये टर्मिनोलॉजी आपको दिखाई पड़ेगी, फ्रंटोलाइसिस एंड फ्रंटोजेनेसिस। Which of the statement given above is are correct? A only one, B only two, C both one and two, and D neither one nor two. Dear aspirants, in this MCQ, both the statements are incorrect. दोनों के दोनों गलत है। ओके, दोनों के दोनों गलत है। सर जियोमैग्नेटिज्म क्या होता है? ओके, सो dear aspirants, let us concentrate on this very question, because in this MCQ both the statements are not correct. Okay, both the statements are not correct, and let us have this explanation. PSS2300 has asked, sir, geomagnetism क्या होता है? सो जियो का मीन्स तो होता है अर्थ, ये तो आप जानते हैं। सो ये जियोमैग्नेटिज्म का जो कंसेप्ट है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन। सो जियोमैग्नेटिज्म डील्स विथ, डियर aspirants, all the aspects of the earth's magnetic field. Okay, and it is also called as geomagnetic field that surrounds our habitat in the form of the magnetosphere. You may say it, a new terminology is coming, okay, out of my mind, that is magnetosphere. Okay, we cannot sense the geomagnetic field in any way, and instrumental measurements as continuous recordings or dedicated surveys are necessary, dear aspirants, to study it. Okay, now भू चुंबकत्व, इसे आप हिंदी में बोल सकते हैं भू चुंबकत्व, और ये पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है तो उसी का अध्ययन है जियोमैग्नेटिज्म। जियोमैग्नेटिज्म तो भू चुंबकत्व, और मेरा पूरा विश्वास है कि आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा, डियर एस्पिरेंट्स, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड this very well. So let us move to the next question, and here we have another most important question, और यहां पर हम फिर एक बार आते हैं अपने प्रश्नों के साथ, जहां हम आपसे प्रश्न कर रहे थे, डियर एस्पिरेंट्स। सो लेट अस हैव yes आई एम सर्चिंग, वो मैं पेज खोज रहा हूं जहां से मैं आप सभी को बता रहा था। यस, आई हैव फाउंड इट, डियर एस्पिरेंट्स। सो आई वाज डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन नंबर, व्हाट शुड बी द क्वेश्चन नंबर? यस, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, yes, neither one nor two. So let us recap.
Consider the following statement and choose the statement which is correct. Number one, the process by which two air masses of different physical characteristics are brought together is frontolysis. Second, the gradual dissipation of the frontal zone is called frontogenesis. Now, I would like to mention the gradual dissipation of frontal zone is called frontolysis. यदि आपने ग्लॉसरी देखा तो आप इसको निश्चित रूप से पकड़ पाएंगे. ओके, प्लीज राइट इट इन योर नोटबुक. द ग्रेजुअल डिसिपेशन ऑफ द फ्रंटल जोन is called frontolysis. The process by which two air masses of different physical characteristics are brought together is frontogenesis, and it leads to the formation of a temperature cyclone. A temperature cyclone. अब साइक्लोन पर भी हम आपसे ये सवाल करेंगे, and this is the reason that both the statements are not correct. एक क्वेश्चन साइक्लोन पे करते हैं. Which of the following, this is question number 9 of the day, which of the following statements are correct about temperate cyclones? Number one, they have a low pressure gradient than tropical cyclones. Second, they travel from east to west. Third, they are generally produced in summers. Which of the statement given above is are correct? A only one, B only two, C 1 and 3, and D all of these. Dear aspirants, A is the answer. Yes, Parasuram ji. Correct. Wonderful. Temperate cyclones are produced in winters and they travel from west to east. West to east. So only first statement is correct. Yes, Mr. Raghava. HS. Very good. Wonderful. Now, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द डे. आज का ये 10वां सवाल. लेटेराइजेशन ऑफ सॉइल इज रिलेटेड टू व्हिच टाइप ऑफ वेजिटेशन. थोड़ा सा हम बदलते हैं. Almost all questions which I have discussed today are very, very important, dear aspirants. Don't forget to write it in your notebook और इसको रिवाइज भी आप जरूर करेंगे. Laterization of soil. What do you mean by laterization of soil? And it is related to which type of vegetation? A, tropical evergreen. B, tropical monsoon. C, temperate evergreen. And D, Mediterranean forest. So if you know, please write the answer in chat box, dear aspirants. So the answer is A, tropical evergreen. The answer is A, not D. Tropical evergreen forest is characterized by closely set trees forming a canopy. Here, bacterial action reduces humus, leading to laterization. अब laterization कैसे होता है इसको भी आप कॉपी में लिख लीजिए. ट्रॉपिकल evergreen forest is characterized by closely set trees forming a canopy. Canopy. वो झोपड़ी नुमा ऐसे ऊपर से, that is canopy. Here bacterial action reduces humus, leading to laterization. Yes, Sakshi, your answer is correct, and Mr. Alam, your answer is also correct. तो इस प्रकार से आपने देखा, ऐसे प्रश्नों को हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया जो काफी महत्व के हैं. अब एक PYQ ले लेते हैं. Dear aspirants, Siachen Glacier is situated to the प्रीलिम्स 2020 का यह सवाल है. सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द A, ईस्ट ऑफ अक्साई चेन, B,
ईस्ट ऑफ लेह, सी नॉर्थ ऑफ गिलगिट, एंड डी नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली. सो व्हाट शुड बी द आंसर? आप बताएं इसका उत्तर क्या होगा. आर यू नोइंग द आंसर डियर एस्पिरेंट्स? बताएं. A, Mr. Alam is telling A is the answer. परशुराम भी उसी का समर्थन कर रहे हैं. A is the answer. Okay, but the answer is D, north of Nubra Valley. Nubra Valley. Nubra Valley was very much in the news. Okay, dear aspirants. इसलिए the answer is D. The answer is D. Siachen Glacier is situated to the north of Nubra Valley. इसको नोट कर लीजिए. एक और क्वेश्चन हम लेंगे प्रीलिम्स 2020 का. कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स. अब ज्योग्राफी हो और मिनरल की बात नहीं हो. नंबर 1 बेंटोनाइट, नंबर 2 क्रोमाइट, नंबर 3 क्यानाइट, एंड नंबर 4 Sillimanite. In India, which of the above is are officially designated as major minerals? Major minerals. A 12, B 4, C 13, D 2, 3, 4. So what should be the answer to this question, dear aspirants? Okay, D is the correct answer. Mr. Parsuram ji, 2, 3, 4. Bentonite is not major mineral, but chromite, kyanite, and sillimanite, these 3, 2, 3, 4 are the major minerals in India. So I'm very happy that you have answered this question. और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं. दिस इज वेरी मच नियर टू एग्रीकल्चर. व्हाट इज आर द एडवांटेजेस ऑफ जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर? नंबर 1 sowing of what is possible without burning the residue of previous crop. Second, without the need for nursery of rice sapling, direct planting of paddy seeds in the wet soil is possible. Third statement, carbon sequestration in the soil is possible. So select the correct answer in the code given below. A12, B23, C31, and D123. And this is also PYQ 2020 prelims. So dear aspirants, if you are able to answer this question, you should write it in the chat box. No, Parsuram ji, the answer is 1, 2, 3. All the statements are correct. Okay, all the statements are correct. Sowing of what is possible without burning the residue of previous crop. Okay, ये जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर का एडवांटेज है. और दूसरा, विदाउट द नीड फॉर नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग. और तीसरा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज पॉसिबल. सो ऑल दीज 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो डियर एस्पिरेंट्स, वी हैव ऑलरेडी, सर डी होगा. यस, डी ही है करेक्ट. सो दिस वे वी हैव consumed half an hour, dear aspirants. So tomorrow at the same time, that is 7:30, 7:30 बजे का ही समय मेरा है. और आधे घंटे में 10 to 15 क्वेश्चंस हम आपका सॉल्व कराएंगे और वे क्वेश्चन बताएंगे जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे. और उसी में ओके, आई ऑल्सो पुट द PYQs. why do I put PYQs? Because dear aspirants, I wish to know whether you are practicing or not. तो जितना PYQ है 2 बार 3 बार उसको अटेम्प्ट कीजिए, जरूर से बनाए. So thank you for joining me. Let me say good night to all of you. Bye bye.